Yes. Unit 1, 2, 3, we have completed. Okay. Uh, on Monday, we will start the unit 4. Okay. If you have any doubts of any topics from unit 1 and 2, so you can ask now. Okay. Because we have right now covered all the topics. Okay. Wait, I shared the syllabus with you. Okay. Wait. Yes, complete your assignments. Okay. I show you how many practicals you have to write. Wait. Okay. Syllabus. Wait. Okay, where is AWP? Artificial intelligence. Okay. So, we have covered unit 1 already. We have covered. आपको दिखाया था. Unit 2 form controls वगैरह we have completed. Unit 3 error handling. इसका थोड़ा practicals remaining है. That we will cover with the unit 4 के साथ we will cover. Okay. And state management हम लोगों ने किया. Okay. And style, themes and master page. Okay. That we have covered. जो टॉपिक्स था जो प्रैक्टिकल था दैट वी हैव कवर्ड. तो यूनिट 1 2 3 हम लोगों ने कंप्लीट किया विद द प्रैक्टिकल्स के साथ. ओके. तो जो प्रैक्टिकल्स था I have tried to show you every practicals, each and every practicals. Okay. Now unit 4 that is related to ADO.NET fundamentals. Okay, for the database. If you want to create the database, okay, for example, we have this now we can design the different pages. Okay, in the Microsoft Business Studio, you know which are controls are there. Okay. Then how to store the page data, controls the data, how to store, but that data will be in small amounts. Okay. If you want to store data permanently in the database backend, okay, then you have to use the ADO.NET concept. Okay. So, for example, you have designed the registration page with the validations के साथ आपने registration page design किया. But when user will click on the register button, so your data will be stored in the so your data should be stored in the database. Okay. तो design कैसे करना है we know, validation कैसे करना है that also we know. But database में कैसे store करना है that we will learn in this unit 4 ADO.NET fundamentals. So we will use the MySQL database जो inbuilt है. Okay, that is inbuilt in the Microsoft Visual Studio में. Okay, we will add the database. Then we will create the different tables in one database. Okay, we will make one database. You know what is database and what is tables. Who will tell me what is database and what is table? कौन बताएगा मुझे? What is database? What is database and what is table? Yes, चलो बताओ what is database? What is database, students? Am I audible? Yes. Abhay, Nashra, Kirti, Sameer, Shahjat, Mohit, Ranjana. So tell me what is database? What is database? Yes, I am waiting. Yes, one answer is there. Mohit, collection of information or data. Okay, Mohit. Okay, database, you know, we have already learned the one full subject. Okay, whole subject we have learned regarding database. Okay, so what is the database? The database is a collection of the data in which we can store our data. Okay, but database we can make we will make the one database, and in one database we will make the different tables. Okay, have you remembered MySQL PLS software? नहीं आपका तो पूरा ऑनलाइन. हाँ,
बट हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था ना. First of what we have do, first of all we have create the one database. Okay, wait, let us write the let us आता आलेले write the अगर आपको याद है, if you remember we have done the practicals. एक मिनट, क्या हो रहा है? Okay, we have done the practical in this software MySQL. So this is the MySQL software. So what we have to do, first of all we have to make one database. Okay, first of all we have to make one database. So how to make the database? create database and write the name of database. For example, I am writing the TYIT. This is the name of database. Okay, now our database is created. Okay, now how to show databases? To show databases. Okay, I hope कि सबको याद है. So now I have created TYIT database. So TYIT is database created. Okay, now I want to use this database. ठीक है, जब ये database use करना है तो I have to write use database. Okay, मतलब write the name of database. What is the name of database? TYIT. Okay, so now our database is changed. Now we are in TYIT database. कौन से database में हम लोग काम कर रहे हैं? ये screen is visible ना? Screen is visible. yes ma'am. Okay, okay. So now we have changed the database. Currently we are in the TYIT database. Now we want to create table. Okay, in this database. So what I want to tell you, okay, there are one database, and in one database we can create the multiple tables. Okay, so for your project also there will be only one database. आप अपने project के लिए एक ही database बनाओगे, and in that one database you will create the different tables. आप क्या बनाओगे? different tables बनाओगे. For registration page है, the registration page का data आपको store करना है, तो you will make the one table, registration table. अगर आपको कोई items add करे हो तो you will store your items behind item tables. Okay, so you will make the different tables, but under the one database. So database एक ही होगा, and in that database you can create the multiple tables. तो ये concept you have to set in your mind. Okay, in database you can store the data, but how? Okay, but how? So क्या करोगे आप? What you will do कि आप एक ही database बनाओगे. Every time you will not create the database. आप हर एक बार database add नहीं करोगे. आप क्या करोगे? You will add the one database. जैसे यहाँ पे मैंने create किया one database TYIT. Now in this database we will create the different tables. So we know how to create the table. So there is a query, create table. Okay, create table name. Suppose I am giving the name student. Okay, then ID, you know. Okay, we have already done all these things in the third semester. उसमें कुछ new है नहीं, हमने already एक किया हुआ है. Okay, and how to give the primary key वगैरह, all these things we have already done semester. but वो आपको revise करवाने के लिए I show you. ID बड़ा हो गया ना? Sorry. ID का जो size है that I should give फाइल भी ज़्यादा है. Okay, name. So, okay, table created. Now how to show table data? DESC student. Okay, this query will be used. Okay, student. ये जो queries हम लोगों ने किया ना, queries use होगा. Okay, for inserting the data, for displaying the data. Okay, queries will be same. जो हमने insert के लिए query करे, जो display के लिए query जो हम लोग use किया था in the third semester MySQL में, the query will be same. Query आपको आना चाहिए था ना, only then you can working with the database. Okay, इसलिए हमने पहला database subject we had learned. Now we are learning the MySQL and .NET, and in this subject we are connecting our front end with the back end. So SQL is a back end. Okay, and we are going to use the MySQL as a backend हम लोग use करेंगे. That is inbuilt available है in the Microsoft Visual Studio में. If you want to connect with your application, Microsoft Visual Studio's application with the another database, external database, so you can do that. Okay, वो भी कर सकते हो. Inbuilt भी है, तो ऐसे syllabus में है तो inbuilt ही आपको करवाना है. तो I will show you the inbuilt connectivity. मतलब जो inbuilt database है उसको कैसे connect करना है with your application के साथ, that I will teach you. Okay. So for example, if you want to insert data,
तो you have to write query like this, insert into table name. This query will be useful ना, तो आपको याद रखना है, मैं आपको आई विल आस्क, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ये हम लोग कनेक्टिविटी करेंगे तो आई विल आस्क, ओके, तो यू शुड नो द क्वेरीज, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, क्वेरी सेम रहेगा, क्वेरी चेंज नहीं होगा, वैल्यूज, द फर्स्ट इज id1, द सेकंड इज नेम, द नेम इज varchar, सो वी हैव टू राइट इन इन्वर्टेड कॉट, ये भी सेम है, इन्वर्टेड कॉट कभी लिखना है कभी नहीं लिखना है, ओके, तो ऑल दिस थिंग्स विल बी नीडेड, ओके, तो ऐसे नहीं कि जो हम लोग पढ़ा उसको भूलना है, मैंने आपको तब भी बताया था, when I taught this subject I told you कि you have to remember all these things because ये सारी चीजें हमको यूज होगा ही, तो इंसर्ट कर दिया मैंने, फॉर एग्जांपल और कुछ मैंने दे दिया नेम्स, ओके, इफ यू वांट टू आपको साथ में और एक साइमल्टेनियसली वैल्यूज ऐड करना है तो यू कैन ऐड, ओके, दे दिया कुछ भी, okay, now how to retrieve the data, select star from table name, what is the table name, student, ये सिंपल हो गया, ओके, अगर आपको रिटर्न करवाना है पर्टिकुलर डेटा, ओके, तो व्हाट यू विल राइट, सिलेक्ट स्टार from table name, what is the table name, student, and write the condition where id equals to 2, so this id 2 है, this data is displaying, okay, so all this type of query you have to write, कभी आपको जरूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल जिसने साइन अप किया है, ओके, जिसने साइन अप किया है और जिस पर्सन में रजिस्टर हो गया है, तो आपको ऐसे ही दिखाना है, डिस्प्ले करवाना है कि जो ऑथोराइज वगैरह है, ओके, तो एट द टाइम यू हैव टू यूज वेयर, तो जो भी ऑपरेशंस डीबीएमएस में हमने किया ऑन दी टेबल्स पे, ओके, जॉइंस हो गया या तो कंस्टेंट्स हो गया, व्यूज हो गया, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स हमको ये सब की जरूरत पड़ेगी व्हेन वी डू दी कनेक्टिविटी, ठीक है, बिकॉज क्या होगा व्हेन अभी हम लोग जब कनेक्टिविटी करते हैं, ओके, तो we need the data retrieved from the tables, okay, तो टेबल में से रिटर्न करवाना है तो we will create the table in SQL, SQL में क्रिएट करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, SQL का जो क्वेरी दैट वी विल राइट इन दी C# लैंग्वेज, हम लोग क्या करेंगे, C# लैंग्वेज में MySQL का क्वेरी वी विल राइट, तो हाउ टू राइट, हाउ टू इंसर्ट डेटा, हाउ टू डिस्प्ले डेटा थ्रू द एप्लीकेशंस, अब मतलब व्हाट वी विल डू, हम लोग एक सपोज रजिस्ट्रेशन पेज बनाया है, वहाँ पे एक बटन रखा है, व्हेन यूजर विल एंटर ऑल दिस ऑल डेटा, नेम, आईडी या तो जो भी एड्रेस आपने जो भी रखा है, ठीक है, व्हेन यूजर विल क्लिक ऑन दी रजिस्टर्ड बटन, तो क्या हो जाएगा, जो यूजर का डेटा है दैट विल बी स्टोर्ड इन दी टेबल, कौन से टेबल में, जो टेबल हमने बनाया होगा, ओके, फॉर एग्जांपल अगर यूजर को रिटर्न करवाना है तो अपडेट करवाना है, मॉडिफाई करवाना है, कुछ भी चेंज करना है, तो वी हैव टू राइट ऑल दिस क्वेरी, अपडेट क्वेरी हमको लिखना है, डिलीट क्वेरी लिखना है, ओके, जो हमने क्वेरीज किया, क्वेरीज विल बी सेम, तो मेरा कहने का इंटेंशन क्या है, जो हमने डीबीएमएस में पढ़ा है क्वेरीज आपको वही हम लोग यूज करेंगे, क्वेरीज में कोई चेंज नहीं है, C# लैंग्वेज वी ऑलरेडी वी हैव लर्न, ओके, हाउ टू run the programs in C# या how to make the applications, वो भी हमको पता है, what is DBMS, MySQL में कैसे क्वेरीज लिखना है वो भी हमको पता है, just what we now need to learn कि how to connect, ओके, हमको क्या पढ़ना है कि कनेक्ट कैसे करना है, ओके, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मंडे, ओके, हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे, तो अभी मैंने डेटाबेस इसलिए बताया कि आपको पता होना, मतलब थोड़ा रिवाइज हो जाएगा कि कौन सा क्वेरी वी हैड लर्न, तो वो सारी चीजें हम लोग करेंगे, तो यू कैन रिटर्न दी डेटाबेस का जो डेटा है वो आप रिटर्न करवा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स में, ओके, जैसे हमने नेविगेशन के लिए भी हम लर्न दी कंट्रोल्स, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स, वैसे डेटाबेस के रिकॉर्ड से रिटर्न करवाने के लिए भी डेटा कंट्रोल्स आ जाए, ओके, आप टेक्स्ट बॉक्स में लेबल में डिस्प्ले करवा सकते हो, बट लेबल में एट अ टाइम एक ही डेटा डिस्प्ले होगा, ओके, अगर इफ यू वांट टू डिस्प्ले डेटा, मल्टीपल डेटा, तो उसके लिए वी हैव द डिफरेंट कंट्रोल्स, डेटा कंट्रोल्स है, ठीक है, वेब सर्वर कंट्रोल्स है, स्टूडेंट 1 मिनट, okay, so that we will learn, don't worry, I will explain to you कि कैसे करना है, basic तो I will
teach चुके हैं, how to create table, how to return the data, okay, then how to insert, how to update, how to delete, जो syllabus में है that I will cover, okay, so that you can make your project easily in this semester, clear? And now unit 4 में वही पढ़ना है, तो unit 4 and unit 5 that is XML security fundamental, these are the new concept, ठीक है, वो हम लोग करेंगे, कोई बात नहीं, चलो now okay, practicals, okay, now practicals you have to complete side by side. Already I have done all the practicals, okay, in the practical session में किया हुआ है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, अगर कोई बाकी है तो that you have to complete. Yeah, क्या गया? Wait. It is Java है ना? It's Linux. Yeah. Okay. Practical, where is practical? Practical कहाँ है इसका? Theory subject है ना? Theory है. Wait. सिलेबस से इसके बाद है, ओके सॉरी, ओके, तो प्रैक्टिकल 1 दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टू राइट, प्रैक्टिकल 2 भी मैंने आपको करने के लिए बोला है, प्रैक्टिकल 3 आल्सो यू हैव टू राइट, वो भी मैंने बोला है, प्रैक्टिकल 4, ओके, नाउ यू कैन डू दिस, ओके, ये तीनों प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी आई हैव डन, ओके, इन दी प्रैक्टिकल सेशंस पे हमने किया है, वैलिडेशन कंट्रोल, एड रोटेटर कंट्रोल, यूजर कंट्रोल्स ऑलरेडी वी हैव डन, देन प्रैक्टिकल 5, ठीक है, नेविगेशन कंट्रोल्स एंड साइट मैप, ये भी हमने कंप्लीट किया है, मास्टर पेज विद अप्लाइंग स्टाइल शीट एंड थीम्स फॉर page notification that we had covered in the last lectures, okay, yesterday we have covered this, then various state of ASP.NET pages, मतलब session query string वाला जो भी है, तो all practicals all we have done, okay, आपको क्या करना है, just you have to write and you have to, first of all you have to perform, जिसके पास भी system है वो लोग perform करोगे practicals करके, then in the soft copy में you will copy paste the code and copy paste the your output जो भी आ रहा है उसे screenshot लेके attach करो, okay, जिसके पास सिस्टम नहीं है दे विल राइट द प्रैक्टिकल्स, ओके, वो लोग प्रैक्टिकल्स लिखेंगे, क्लियर? अभी किसी को डाउट है, यस और नो? प्रैक्टिकल 5 आई हैव आई वांट प्रैक्टिकल 5 तक मुझे कंप्लीट चाहिए सबका, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ओके, सब किया है हमने ऑलरेडी, ये सारी चीजें परफॉर्म किया हुआ है, आपको हार्डली उसमें से कुछ 4 to 5 मिनट 3 to 4 जो नहीं किया होगा वो आपको करना है, बाकी ऑलमोस्ट रिव्यू कंट्रोल्स ये सारा ऑल ये सारा practicals we have done, okay, you can see our recorded lectures है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, if कोई डाउट है तो you can ask me, okay, then practical 6, 7 and 8 that are related to database वो भी हम लोग कवर कर लेंगे, but you have to write, okay, आपको राइट मतलब लिखना है, किसी के पास अगर सिस्टम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, अभी जिसके पास सिस्टम है दे विल परफॉर्म फर्स्ट एंड देन उसको कोडिंग जो कॉपी पेस्ट करोगे, क्लियर? यस और नो? वी हैव ऑलरेडी डन, ओके, ये सारे प्रोग्राम हम लोगों ने किया हुआ है, तो कुछ न्यू नहीं है इसमें, अगर तो भी कोई डाउट है तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे, बट आप पूछोगे तो यस, क्लियर? ओके, तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल सेशन, ओके, देन थियरी असाइनमेंट्स व्हाट यू विल डू, आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस बहुत सारे है ना, तो यू विल राइट दी, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो यू डोंट राइट, ओके, जो सिंगल सिंगल क्वेश्चन है वही आपको लिखना है, ये जो क्वेश्चंस बैक है उसमें एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से उन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है, तो व्हाट यू विल डू कि जो रिपीटेड आपको नहीं लिखना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल से यहाँ पे रजिस्टर डायरेक्टिव है, ओके, मतलब यूजर कंट्रोल के लिए आपसे एक अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, तो ये 3 जो क्वेश्चन है ना वो एक ही है, ओके, तो आपको क्या करना है, जस्ट write about the user controls, तो you can write the question like that की write a short note on user control, तो इस तीनों का एक ही आंसर होगा, आप एक नहीं सब पूरा लिख दो, ओके, देन वैलिडेशन है, तो व्हाट यू विल राइट, ये जितना भी वैलिडेशन कंट्रोल्स है ना, क्वेश्चंस है ना, तो आप क्या करोगे, उसको राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वैलिडेशन कंट्रोल्स, एक ही करोगे, ठीक है, तो ऐसे मत देखो कि इतना सारा है तो कैसे होगा,
क्लियर? ओके, इसको कंप्लीट करो। एरर हैंडलिंग में जस्ट अभी व्हाट इज एक्सेप्शन, हाउ द एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन एस्पिरेटेड यूनिट 3 में एक ही क्वेश्चन अभी लिखो, बाकी ये सब हमारा बाकी है। फाइनली वगैरह वो इसमें ही आ जाएगा, ये 77 क्वेश्चंस में। ओके, तो इसमें आपको एक ही लिखना है। नाउ स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो क्या व्हाट क्वेश्चन यू विल राइट, कि राइट ए शॉर्ट टर्न स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो व्हाट इज टेक्निक, कौन से टेक्निक्स है, व्हिच आर द क्लाइंट साइड, व्हिच आर द सर्वर साइड, एंड वो टेक्निक्स का एक स्मॉल एग्जांपल, एक लाइन में डेफिनेशन, बस। क्लियर? तो क्या हो जाएगा इससे, यू विल रिमेंबर। ठीक है, आपको ये सारी चीजें ना याद हो जाएगी, तो आपको एग्जाम टाइम इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। देन स्टाइल, थीम एंड मास्टर पेज में क्या करोगे, व्हाट इज स्टाइल, व्हाट इज थीम, व्हाट इज मास्टर पेज, एंड राइट द वन स्मॉल एग्जांपल। तो आपका हो गया असाइनमेंट क्वेश्चन। तो ये पूरा इंडिविजुअल इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ यू नो व्हाट इज अ स्टाइल शीट, क्या आपको पता है। तो अगेन एंड अगेन डोंट राइट। ओके, इन द वेब प्रोग्रामिंग एचटीएमएल में हमने डिटेल्स में उसका लिखा हुआ है, तो नाउ अभी उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक लाइन में व्हाट इज स्टाइल शीट, व्हाट इज थीम, व्हाट इज मास्टर पेज, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल शीट एंड थीम, उतना आपको करना है। क्लियर? तो ऐसा इतना क्वेश्चंस नंबर देख के मत हो जाओ कि मैम ये तो 106 क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन था और वी विल राइट, ऐसे नहीं है। जो न्यू टॉपिक्स हैं, जैसे मैं आपको क्लास में लेक्चर्स में पढ़ा रही हूँ, उतना ही आपको लिखना है। इफ यू आर राइटिंग ड्यूरिंग द लेक्चर्स, अगर आप लेक्चर्स में लिख रहे हो रोज का रोज, तो आपको अगेन ये लिखने की जरूरत नहीं है। आई विल कंसिडर दैट। ओके, जो लेक्चर्स मैंने अभी तक जितना भी लेक्चर्स आई हैव टेकन ना, तो वो लेक्चर्स में अगर आपने लेक्चर्स नोट्स बनाया होगा तो वो भी चलेगा। क्लियर? तो आपको इतना अलग से ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नाउ क्लियर स्टूडेंट्स? यस और नो? आई होप के कोई कोई जो रेगुलर लेक्चर्स अटेंड कर रहा है, कीर्ति, नशरा, अभय, कृतिका, यस मैम। ओके, शाहजाद, रंजना, समीर वगैरह, ये जो मोहित रोज लेक्चर्स अटेंड करो, तो रोज का रोज नोट्स लिखा होगा तो भी चलेगा, मुझे ऐसा कोई अलग से नहीं चाहिए। क्लियर? तो ये तो हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, असाइनमेंट्स हो गया। ओके, नाउ यू कैन आस्क व्हाटएवर डाउट्स यू हैव। अगर आपको कोई डाउट है कोई टॉपिक्स में वगैरह, यूनिट 1 2 3 कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो वी कैन रिवाइज नाउ। अदरवाइज वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटाबेस वगैरह। यस, एनीवन हैज एनी डाउट? यस और नो? कोई डाउट है किसी को? मंडे हॉलीडे है, किसका हॉलीडे है, क्या है मंडे? मोहित, छठी क्या है? जन्माष्टमी? पता नहीं, जन्माष्टमी का अभी तक कुछ सर्कुलर नहीं आया। अगर हॉलीडे होगा तो यू विल बी इन्फॉर्म। ओके, क्योंकि अभी तक हमको भी कोई नोटिस नहीं आया है कि मंडे को छुट्टी है। आई थिंक कैलेंडर में भी नहीं है ना मंडे, पता नहीं। कोई बात नहीं, मंडे छुट्टी होगा तो छुट्टी, अदरवाइज फिर हम लोग ट्यूसडे स्टार्ट करेंगे, कोई इतना इश्यू नहीं है उसमें। वैसे भी आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स तो रोज ही छुट्टी मनाते हैं, है ना मोहित? ओके, और कोई डाउट है? लेक्चर्स में तो रोज आता है, बट पता नहीं, आंसर नहीं देते। चलो, नाउ मैं एंड दिस लेक्चर। कोई डाउट नहीं है तो, अगर कोई डाउट है तो यू कैन से, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, नो इश्यू, वी हैव द टाइम, टाइम है हमारे पास। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन एवरी टॉपिक एटलीस्ट मिनिमम 2 to 3 टाइम्स मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर तो भी इनकेस अगर आप कुछ पढ़ने बैठे और कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन आस्क। ओके, तो मैं एंड दिस लेक्चर, एंड कर दूं? यस स्टूडेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, एटलीस्ट यस नो करो। मैम, हाँ बोलो। प्रैक्टिकल के टाइम डाउट आएगा तो वी कैन आस्क ना। यस यस, एनी टाइम स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला है ना, कोई ऐसे नहीं रखना है कि मैम, आप जब भी अगर रात को भी प्रैक्टिकल करने बैठे हो घर पे तो भी नहीं समझ में आ रहा तो वी कैन आस्क। ओके, लास्ट ईयर के बच्चे मुझे कभी मैसेज करके, मैम ये कर रहे तो ये नहीं आ रहा है, नमीरा वगैरह काफी मतलब स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर के बैच में। ओके, तो यू कैन आस्क एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल सेशन भी चलेगा, प्रैक्टिकल होने के बाद आप
घर पे कभी भी प्रैक्टिस करने बैठो, रात को या तो मॉर्निंग, जब भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन आस्क मी, आप जस्ट स्क्रीन शॉट सेंड करो, मैम ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है तो अभी हम लोग क्या करें, ठीक है, आई विल हेल्प यू, नो प्रॉब्लम। बट व्हाट इज द मेन थिंग, ये सब्जेक्ट आपको समझ में आना चाहिए, कुछ एज अ मतलब प्रैक्टिकल है तो आप कुछ उसमें इम्प्लीमेंट कर पाओ, इतना तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना ही चाहिए। ओके, Okay, ma'am. अब एंड कर दूं मैं? Yes, ma'am.